Just, I mean, so you're just thinking, well, I want to get some disciples, I want to get some leaders, I want to get some preachers. हम सोचते हैं कि ये शिष्य बनाना है, लीडर्स चाहिए, ये सब सारे चीज़ें चाहिए. But there was a very important lady. लेकिन वहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्त्री थी. And through a home. और उसके घर में. Missions in Europe started. उसके घर से पूरे यूरोप में मिशन स्टार्ट हो गया. Are you excited, ladies? We just finished the ladies' ministry meeting. I was the unlikely man over there. People walked in and saw me first. And they were like, what's happening here? Anyway, but think about it. अब सोचिए इसके बारे में. Lydia. लीडिया जो है. A simple woman. एक सादी औरत. By the riverside. वो नदी के किनारे. And she opens her. I love the way the Lord puts it. The Lord opened her heart. प्रभु ने उसका हृदय खोला. She heard the gospel. उसने सुसमाचार सुना. She said, Paul, come on. Paul, आ जाओ. Come on to my home. मेरे घर पे आ my जाओ. husband. मेरे पति से You're gonna मिलिए. be my family. मेरे परिवार से मिलिए. And then soon Lydia's whole family. फिर लीडिया का पूरा परिवार जो है. Has opened their home. उनका घर खोल दिया. This week we went down to Nalasapara. नालासोपारा गए थे पिछले I हफ्ते. was so blessed. मैं बहुत ही खुश I हुआ. was so blessed. मैं उस आशीषित हुआ. Pastor Ganesh and Pastor Doug and all these people. Pastor Ganesh, Pastor Doug, ये जो लोग हैं. Pastor Melvin. Pastor Melvin जो है. Amazing job. उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया. There's over 90 people that are coming to the Nalasapara. 90 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे चर्च में आते हैं. It was amazing. बहुत खूबसूरत है. I just was really edified. ये मुझे प्रोत्साहित किया. 90 adults. 90 बड़े लोग. Plus children. और उससे बच्चे भी. All from Hindu backgrounds. और सारे जो हिंदू बैकग्राउंड से. Fervently opening their Bibles. और वो बाइबल खोले हुए. And baby believers. और विश्वासी. But just so hungry for the things of God. और भूखे हैं परमेश्वर के. And Ram Prasad is here. राम प्रसाद है उनमें. Just stand for one moment. राम प्रसाद खड़ी रहे. He's from Nepal. वो नेपाल. He's from Nalasapara. वो नालसोपारा में. And he's become Ganesh's real key assistant. और गणेश का असिस्टेंट है. Think about that for a moment. Wow. I asked Ganesh. गणेश को मैं पूछा. I said, how did this all happen? ये कैसे हुआ? He said, we just went house to house. उन्होंने कहा कि घर से घर गए. And when we go to a house, जब हम घर जाते हैं, somebody would get saved. और उद्धार पाते हैं. And they would say, I got a friend that I want you to pray for. फिर वो लोग कहते हैं कि मेरे पास दोस्त है. They stayed with a plan. और वो योजना में रहना. House to house. घर से घर. Simple people. सादे लोग. Like the Hindi church. जैसे हिंदी चर्च है. But praise God, they're going to be in heaven one day. I thought brothers and sisters in Jesus. परमेश्वर की स्तुति हो कि एक दिन वो स्वर्ग में रहेंगे. So the Philippine church. और ये फिलिपिन चर्च भी. Jailer gets saved. और जेलर जो है उद्धार पाता है. And then God brings an earthquake. और परमेश्वर भूकंप लेके आता है. Elvis Presley wrote a song once. एल्विस प्रेस्ली जो एक गायक है वो. Some of you don't know idea who Elvis Presley is. It was called the Jailhouse Rock. Well, Philippines Acts 16 was the first Jailhouse Rock. All right, forget that one. Forget that one. God was moving. परमेश्वर हिला रहा था. The book of Acts is powerful. प्रेरित काम से. We can expect miracles when we move with God. चमत्कार हम लोग उम्मीद करते हैं. And then I don't know what happened. लेकिन कैसे वो मुझे नहीं पता. All I know is from Lydia and the jailer. लीडिया और जेलर जो है. 15 years later. 15 साल के बाद. Paul writes the book of Philippians. पॉल जो है फिलिपी का And he बुक लिखता starts है. this with this way. और इससे लिखता है. Paul and Silas. पॉल और साइलस. To the elders and the deacons in the church of Philippi. और जितने भी जो बड़े हैं और जो डिकन्स हैं उनके लिए. 15 years. और 15 साल. This church had become an amazing church. ये चर्च जो है बढ़िया चर्च बना. It had pastors. पास्टर थे वहाँ. It had deacons. डिकन्स थे वहाँ पे. What happened? ये क्यों हुआ? It was powerful. क्योंकि And this little church. ये जो छोटा चर्च started by the riverside. ये नदी के किनारे शुरू हुआ था. Now we're supporting missionary work. अभी ये मिशनरी कामों को सपोर्ट करता है. It was amazing. और ये अमेजिंग है. All of this is a God's miracle. ये परमेश्वर का चमत्कार है. That's why I love soul winning. इसलिए ये जो प्रचार का दिन बहुत अच्छा है. How many of you love soul winning? कितने How many of you believe that we प्रचार should win souls regularly? कितने जन जाते हैं और प्रचार Reaffirm करने that के in your लिए. heart. Reaffirm that in your ये heart. अपने हृदय में बोलो. We love soul winning. क्योंकि ये बहुत अच्छा I है. love Pastor Shaker's testimony on Sunday. पास्टर शेखर का टेस्टिमनी अच्छा था My संडे. wife and I were talking about that. It was great. और ये लोग बात कर रहे थे इनके बारे में. But think about that. और ये सोचिए आप. You know, all our churches in India.
जितने भी भारत में जो चर्चेज हैं All our churches in Nepal. और नेपाल में The one thing I love about Great Grace churches. और एक चीज ग्रेट गेस्ट चर्च Even का if अच्छा there's है 10 people gathered together, they're going soul winning. 10 जन भी रहेगा तो भी वो लोग प्रचार के लिए जाते हैं Everybody goes soul winning. और सब लोग जाते हैं And let me tell you what happens. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्या I हुआ want to encourage you. आपको प्रोत्साहन करना The चाहूँगा value of one person being led to the Lord. कि एक व्यक्ति का कीमत जो है जो प्रभु में लाना Pastor Rajan, पास्टर राजन जो है 15 years ago, was led from a Hindu background to Jesus 15 साल पहले जो है उसे प्रभु में लेके आया by some person we do not know. जो जिसको हम जानते नहीं उन्होंने लेके आया He उसको। challenged him to read the Gospel of John. उसे गॉस्पेल का जॉन जो है वो पढ़ने के लिए बोला And this Nepali man gave his life to Jesus. और ये नेपाली आदमी जो है प्रभु को अपना जीवन दिया And look what happened. और फिर देखो क्या हुआ Through one man's life. एक आदमी के द्वारा Not only 17 churches in Nepal, अभी 17 ही नहीं है चर्च but now we have a radio program that's beaming to 30 million people. रेडियो प्रोग्राम जो है इतने 30 मिलियन लोगों को चला जाता है I counted that 27 of our 40 plus pastors in India 27 और 40 से ज्यादा जो पास्टर है have come from Hindu backgrounds, Buddhist backgrounds, or animistic backgrounds. हिंदू बैकग्राउंड से और अन्य बैकग्राउंड से आए हुए हैं Isn't that something? और ये कितना खूबसूरत है I love the value of winning a soul to Jesus. ये प्रचार करने का जो बहुत खूबसूरत कीमत है And I love that. और ये बहुत ही अच्छा है Edward Kimball. एडविन क्यूबो है Edward Kimball. किम्बल He was a shoe salesman. वो एक जूता बेचने वाला He led D.L. Moody to the Lord. और डीएल मूडी को उसने जीता And D.L. Moody और डीएल मूडी जो है led millions of people to Jesus उसने बहुत Christ. सारे लोगों को प्रभु में लेके आया One of them was F.B. Mayer, एक जन जो है अभी मेयर था who wrote many books. और जिसने पुस्तकें लिखी है F.B. Mayer won Wilbur Chapman. अभी मेयर जो है विल्बर्ट चैपलिन Wilbur Chapman won Billy Sunday. और फिर उसने बिली संडे को जीता You don't know who they are. आपको नहीं मालूम रहेगा वो कौन है Billy Sunday, Billy Monday, both the same thing. Whatever. Billy Sunday won Billy Graham to Jesus Christ. बिली संडे प्रोग्राम को उसने प्रभु में लेके आया These 6 men और ये जो 6 आदमी together won more than 2.5 billion people to Jesus Christ. 2.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को जीता है प्रभु ने Through 2 generations. दो वंश में So the first thing, Paul loved winning the lost. पॉल को पसंद था प्रचार Never करना। underestimate कभी भी उसको कम गिरा है नहीं the next person who you win to Jesus Christ. उसने कभी सोचा नहीं कम प्रचार करने के लिए Amen? Amen? Amen. The second simple thing that Paul did, दूसरा सादा चीज उसने किया I'm just sharing from my heart, मैं अपने हृदय से बोल रहा हूँ is Paul started Bible schools training national preachers. पॉल ने बाइबल स्कूल स्टार्ट किया तो Listen to this. आप ये सुनिए In Acts 19, और प्रेरित किताब 19 में Paul goes to Ephesus. पॉल जाता है एफिसस में We could look at this again. Listen carefully, वापस guys. से यहाँ पे देखिए There's a strategy and a strategy that Paul had. योजना था पॉल के इसमें When first Paul went on his first journey, he took Barnabas पॉल ने and John पहले Mark. पॉल ने मार्क और बारनबास को लिया पहला यात्रा में Remember? Then on the second journey, he took Silas and they went all over. दूसरा यात्रा में साइलस को लेके गया And Luke joined them. और फिर लूक उसको उनके साथ गया But now Paul is going and planting new churches. पॉल जो है नए कलीसिया स्थापित कर रहा है And he has a unique problem. उसके पास अनोखा तकलीफ There are more churches than leaders to look after them. वहाँ पे चर्चेस ज्यादा है लीडर्स देखने के लिए On his second journey, और दूसरे जर्नी में he leaves Luke here at Philippi. लूक फिलिपाई में रखता He है leaves Timothy here at Thessalonica. तिमोथी थेसलोनिका में रह जाता है And they're pastoring and ministering to the churches. वो पास्टरिंग कर रहा है उस कलीसिया की Now Paul thinks, पॉल सोचता है he says, we need more men raised up. पॉल सोचता है कि उस और आदमी चाहिए So on his संभालने third के missionary journey, लिए। तीसरे मिशन जर्नी में Paul changes his strategy. पॉल जो है योजना को बदल देता है He's not just going planting churches. और फिर वो सिर्फ स्थापित ही नहीं कर रहा He है establishes a base in Ephesus. वो जो नींव जो है एफेसस में खड़ा करता है And here he starts a Bible school. और यहाँ से वो बाइबल शिक्षण चालू करता है Acts 19 verse 10. प्रेरित किताब 19:10 में Ephesus एफेसस was में a city of 200,000 people. 200,000 से भी लोग थे वहाँ It पे was a major seaport. वहाँ पे पोर्ट भी है It would be like समुद्र। Mumbai city. जैसे कि मुंबई शहर में It was a very pagan city. वहाँ पे अन्य जाति जैसे लोग थे But Paul goes there.
पॉल वहाँ पे जाता है, preaches in the synagogue for months, many months. वहाँ पे प्रचार करता है मंदिर में, And he takes the disciples out. और शिष्य को लेके जाता है, He starts a Bible school. वहाँ पे वो बाइबल स्कूल स्टार्ट करता है। For 2 years, 2 साल तक it says there in the scriptures, उस किताब में लिखा है, he takes the disciples and he teaches them in the lecture hall of the school of Tyrannus. उस स्कूल के हॉल में वो वहाँ पे सिखाता है टायरेस में। I don't know why they call him Tyrannus. मुझे नहीं पता उसका नाम क्यों रखा The है। Greek word means tyrant. टायरन ग्रीक में Maybe that's the students gave him that name. और विद्यार्थी ने ये नाम दिया। But for whatever happened, लेकिन कुछ भी हो, it was a Greek philosopher's schoolroom, यूनानी का एक स्कॉलर लोगों का ये था। and some manuscripts say और कुछ किताब में लिखा है that Paul began teaching from 11 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. पॉल ने पढ़ाई शिक्षा देना 11 से लेके 4 o'clock in the afternoon. 4 बजे तक उसने चालू रखा। You've heard me say that before. आपने पहले सुना भी है। The hottest time in the afternoon. और ये बहुत ही गर्म समय When था। everybody was sleeping. और सब लोग सो रहे थे। The Turkish hot sun. एकदम भयानक धूप कड़ी It was धूप। siesta time. It was afternoon sleep time. और ये दोपहर का समय था, नींद का समय। Paul and his disciples पॉल और उसके शिष्य जो है learning God's word. परमेश्वर के वचन को ध्यान दे रहे थे। It's a wonderful thing. और ये खूबसूरत चीज़ है। And the next verse says, और उसके बाद वचन जो कहता है, the word of God spread throughout Asia. परमेश्वर का वचन पूरे एशिया में फैला। I love that verse. और ये खूबसूरत वचन Because we है। belong to Asia. और हम एशिया में हैं। Simple strategy. ये सादा योजना है। I want to show you how we are doing. और हम आपको बताना चाहते हैं And हम कैसे कर रहे just हैं। by way of thinking about this again, अगर आप देखेंगे तो वापस से that's our Bible schools. ये हमारा बाइबल स्कूल है। We have a Bible school in Mumbai. हमारा बाइबल स्कूल जो है मुंबई में Wow, है। isn't it exciting that people are learning the word of God here, right here in this classroom? यहाँ पे क्लासरूम में परमेश्वर का वचन सुन रहे We हैं। have a Bible school in Basai. वसाई में बाइबल स्कूल है। Not all of your pictures are there because you didn't even come in there when we took the ये pictures. पहले का पुराना पिक्चर है। 22 men 22 आदमी from all over North India. पूरे उत्तर भारत से, It's going to happen. और ये होने वाला है। We have a Bible school in Nepal with 14, 16, 17 men. बाइबल स्कूल जो है नेपाल में 16 से ज़्यादा आदमी। We're starting a Bible school in Orissa. उड़ीसा में शुरुआत होगा। Think about this. ये सोचिए इसके बारे में। Look at these slides. यहाँ पे देखिए नक्शे को। One day, एक दिन we want to see men go out. एक दिन हमारे आदमी वहाँ पे जाते हुए देखना In चाहिए। 4 years' time, 4 साल के बाद we have 3 men from Bangladesh. 3 आदमी जो है बांग्लादेश से, Maybe by the grace of God, और परमेश्वर के अनुग्रह से we can see a church started. Churches started in Bangladesh. Greater Grace वहाँ पे Church एक दिन started. ग्रेट ग्रेस का Hallelujah. चालू हो Isn't गया। that great? That's wonderful. In a few years' time, और थोड़े साल के बाद somebody goes to Tibet. तिब्बत जाएगा Or कोई, somebody goes to Nepal. नेपाल जाएगा कोई, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश जाएगा, And somebody goes to Bihar. कोई जाएगा बिहार, And somebody goes to Rajasthan. कोई जाएगा राजस्थान, And Delhi. देहरादून And Gujarat. और गुजरात। Wow, it's exciting. ये कितना खुशी की बात है। Pastor Atul is going tomorrow राष्ट्र अतुल जो जा रहा है कल to Gujarat. गुजरात जा रहे हैं। We have these preachers there. ये सारे प्रीचर्स हैं वहाँ These पे। are many of our men. ये जो हमारे आदमी They have हैं, 40 churches between them. इनके पास 40 कलीसिया I है। just want to keep this before you ये tonight. आपके सामने रखना चाहूँगा। It's just a unique service. ये बहुत ही अनोखा है, But think about it. और आप सोच सकते हैं इसके बारे में। Okay, go to the next slide, please. And this is what we look like tonight. आज हम लोग इस प्रकार से दिख रहे हैं, But think about the future. और लेकिन भविष्य में It देखो, excites me to pray for this. इसके लिए हम मुझे प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते Think of हैं। all the places that we could be future. देखो ये भविष्य में Good churches in Orissa. भविष्य में कलीसिया Good किस churches प्रकार होगा, in Gujarat, गुजरात में, उड़ीसा में, Bangladesh, बांग्लादेश, and all these places. ये सारी जगह पर Oh God, let it happen. ये परमेश्वर ऐसा ही हो। This is what God would want. ये परमेश्वर की योजना है, ऐसे ही This is चाहिए। His plan इसका योजना है that He will build His church. कि उसका वो कलीसिया बांधेगा। And you don't have to be a preacher to do this. उसके लिए प्रीचर बनने की जरूरत You are a नहीं। part of this big plan. हम भाग इस योजना में, You encourage us. तो उत्साहित करो। So Paul started Bible schools. पौल ने बाइबल That was शिक्षा great. चालू किया। Nobody can do anything alone. कोई भी अकेला नहीं कर सकता, We can only do it if we're a team together. अगर टीम रहेगा तो ही कर पाएंगे। Everyone is important. सब लोग महत्वपूर्ण हैं। Go to the next one, please.
It was the third strategy. तीसरा जो योजना ये था, And I love this. और ये खूबसूरत है। Now I'll just close with a few minutes. और थोड़े समय में बंद करूँगा। Turn to Acts 16. प्रेरित लिखा कि 16 से So Paul, number one, नंबर 1, they went on missionary journeys. मिशनरी यात्रा पे गए। They looked for open hearts, to open doors and houses. खुले हृदय और खुले द्वार के लिए गए। Number two, नंबर 2, they started Bible schools. बाइबल स्कूल स्टार्ट किया। Number three, नंबर 3, I love this. ये This भी is अच्छा very है, important for us. ये भी महत्वपूर्ण This है, is my main point. ये मेन पॉइंट है। Paul looked for people और जो है देख रहा था लोगों को who just had a heart for God. जिसका हृदय प्रभु के लिए। I want you to think about this for a moment. Go back to Acts 16 and look at those verses. आप 16 पे जाओ, देखो इसको वापस से। Paul came to Derbe and Lystra, पॉल जो है डर्बी और लाइस्ट्रा में आया, and a disciple was there named Timothy, शिष्य था तिमोथी, the son of a Jewish mother. और यूनानी का विश्वासी, She was a believer, और वो बिलीवर थी। but his father was Greek, और उसका पिताजी जो था यूनानी था, and he was well spoken of by the brethren. और उसके भाई लोग सुनाम थे भाई लोगों में। Think about this. और इसके बारे में सोचो, Many years before this time in Acts 16, वो साल पहले इस 16 अध्याय के Paul पहले had come to Lystra, पॉल जो है लाइस्ट्रा में आया था। and as he entered the city, जब वो उस शहर में प्रवेश there किया, was a man who was lame, और एक आदमी जो है ऐसे ही पड़ा था, and Paul prayed for the man, और पॉल ने उस पर प्रार्थना किया, and he was healed. और वो चंगा हुआ। And the people of Lystra were so excited. और लाइस्ट्रा के लोग जो है बहुत They said, उत्साहित the हुए। gods have come down to us. ये परमेश्वर यहाँ पे आए हुए हैं। This is Barnabas and Zeus. बारनबास जो है इस This is Jupiter and Zeus. जेस जो है। Okay. So what happened? और ये क्या हुआ? But then the people turned against Paul, पॉल के अगेंस्ट लोग आ गए, and they stoned him. और उसको पत्थरवा किया। Well, Paul gets up, पॉल जो है उठता है, goes out of the city, और वो शहर के बाहर जाता है, and then later on he comes back again and preaches. और फिर वापस से आता है और फिर प्रचार करता है। Now listen carefully. और सुनिए ठीक There's a से, young boy there, a young man. वो जवान आदमी है, Maybe I'm thinking he was 16, 17 years शायद old. से वो 16-17 होगा, His name was Timothy. और उसका नाम तिमोथी है। And Timothy तिमोथी जो है was born of a Jewish mummy, वो यहूदी से जन्मा हुआ है, but his father was a Gentile. पिताजी जो है यूनानी है, His father was an unbeliever. और उसका पिताजी अविश्वासी है। And if you had got married that way, अगर आप इस प्रकार से शादी किया हुआ है, Timothy grew up as an outcast in his village. तिमोथी जो है भारी There was a word for these people that had mixed marriages. ऐसी शादी को कुछ नाम रखा They गया were called in the Hebrew mamzers, है। outcasts. ये जो है भारी लोग हैं। So Timothy grew up, तिमोथी जो है बड़ा and when he हुआ, was born, जब वो जन्म लिया उसने, his mother brought him to the rabbi और उसकी माँ ने उस रब्बाई के पास लेके आया and told the rabbi, please circumcise him. और उनसे विनती किया कि उसको खतना कीजिए। The rabbi said, oh no, I cannot do that. रब्बाई ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, I love you, my girl. क्योंकि मैं प्यार करता हूँ But you आपसे। know what the law says? लेकिन नियम क्या बोलते हैं आपको पता है? If anybody gets married to a Gentile, अगर कोई व्यक्ति अन्य जाति से शादी they are करता है, not part of the Jewish तो community. फिर वो यहूदियों का भाग नहीं है, They are an outcast. वो लोग बाहर के हैं। And you can imagine Timothy's mommy. और कल्पना कीजिए उसकी माँ का क्या हाल होगा। She was very sad. वो बहुत ही उदास थी। Timothy grew up तिमोथी जो है बड़ा हुआ outside the Jewish community. यहूदी के लोगों से बाहर। He could not go to synagogue school. वो आराधनालय में नहीं जा सकता था। He could not be circumcised. उसका खतना भी नहीं हो सकता When था। all his friends in the village were reading the Torah जो उसके दोस्त जो गांव में वो जो तोरा पढ़ रहे in the थे village school, और स्कूल में, Timothy was an outcast. तिमोथी जो है बाहर का था। But then one day, लेकिन एक दिन there's a great rabbi who comes to the village, एक महान राबा आता है वहाँ पे, and his name is Paul. और उसका नाम पॉल था। And he travels hundreds of miles पॉल जो है 100 मील दूर सफर करता to है this little village. ये छोटे से इस In Lystra. गांव में और लाइस्ट्रा में। If you study Lystra, अगर आप पढ़ते हो उस लाइस्ट्रा के बारे it में, is a small little town. ये छोटा सा एक शहर है। You wonder, और आप सोचोगे, when Paul normally focused on the big cities of Ephesus and Thessalonica and Athens, पॉल जब बड़े-बड़े शहरों पर ध्यान देता है, why did he come to Lystra? तो फिर वो छोटे से क्यों इस टाउन में क्यों आया? Today there's no city, no town called Lystra. There's just an archaeological mound. ऐसा कोई नाम नहीं है अभी इस समय।
But we believe the Spirit of the Lord led Paul to Lystra. परमेश्वर की आत्मा पॉल को अगुवाई की वहाँ उस जगह पे जाने की। There was a young boy और वहाँ पे जवान लड़का था। who heard Paul preaching about the Messiah. पॉल जो प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में। And he heard it. और उसने सुना। And then he watched this extraordinary man get stoned. और वो ये देखा कि उसका पत्थरवाह भी हो रहा है पॉल। And he said, "Oh my God, this message was amazing, and the man gets stoned." और ये वो सोचने लगा कि ये परमेश्वर ये अच्छा संदेश था और इसके लिए उसका सताव हुआ। And then, lo and behold, he watches Paul courageously come back and start preaching again. और ये भी देखता है कि पॉल वापस आता है एकदम दृढ़ होकर और वापस से प्रीचिंग करता है। And Timothy in his heart said, तिमोथी अपने हृदय में सोचता "I'm है going to follow this man." और मैं इसके पीछे हो लूँगा। But soon Paul was gone. और पॉल फटक से निकल गया। Here's Timothy, the 16, 17-year-old. तिमोथी और फिर 16 में। But Paul never forgot what was in Lystra. पॉल भूला नहीं उस शहर के बारे में। And in his second missionary journey, दूसरे मिशन जर्नी में he goes all the way back to Lystra वापस से वो लाइस्ट्रा में जाता है to find this young boy called Timothy. और तिमोथी को ढूंढने जाता है। And Timothy तिमोथी जो है is grown. वो बड़ा हुआ है। And Timothy could say to Paul, और तिमोथी जो है पॉल को बोल "Paul, सकता I है cannot follow you. अभी मैं तेरे पीछे नहीं हो सकता। I'm a monster. अभी मैं ऐसा हूँ, I'm an outcast. मैं बाहर का हूँ, You don't understand." आप जानते नहीं। And Paul said to him, पॉल ने बताया "Not in Jesus Christ you are. You're not a monster. आप यीशु मसीह में हैं, आप बाहर के नहीं हो। For in Jesus Christ there is no Jew and Gentile, यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं यीशु but मसीह। we're all accepted in Him. हम सब यीशु मसीह में स्वीकार किए गए हैं। You can believe in Him and be a child of God." आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसका संतान हो। And so Timothy began to follow. और तिमोथी जो है पीछे चलने And लगा। Timothy became an amazing follower of Jesus Christ. तिमोथी जो है यीशु मसीह का अच्छा भक्त बन He गया was one of his most loyal companions. और परमेश्वर का ईमानदार व्यक्ति था ये। Wow. I think about that. और ये सोचता हूँ इसके बारे में। God puts us in His plans, and we must remember that. और ये परमेश्वर अपने योजना में रखता है। When we are winning the lost to Jesus Christ, जब हम प्रचार करते हैं never forget. कभी भूलिए मत। There's a Pastor Rajan on the way. पास्टर राजन जो है रास्ते पे हो Never सकता है, forget. कभी भूलिए There's मत। an Aviram. अविराम हो सकता है And उस there's रास्ते somebody पे else. और कोई भी हो सकता है उस रास्ते I पे। love that. और एक Think पसंद about है। this one man. एक आदमी के बारे में सोचिए। I've told the story before, but I will for these men's sake. पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन Think फिर about this बताऊंगा। man. इसके बारे में This सोचिए। is one of our great grace pastors up in Nepal. ये हमारा डेडिकेट पास्टर है वो नेपाल में। His name is Pastor Beam. इसका नाम है पास्टर बीम He is married. और ये शादीशुदा है। He has 4 children. इसके पास इतने बच्चे हैं And he lives very high up in the mountains in और Nepal. बहुत ऊंचे पहाड़ पर वो रहता है And he has 3 churches now. और उसके पास 3 कलीसिया है। If you want to get to his church, अगर आपकी इस कलीसिया में जाना है you have to go by the mountains. आपको इस पहाड़ी रास्ते से You जाना है, have to go further on. फिर आगे जाना है, Can you see that mountain? फिर आप उस पहाड़ को देख रहे You हैं, have to climb that mountain, वो पहाड़ को चढ़ना है, go up the down the other side, फिर उस तरफ जाना है, climb another mountain, फिर और एक पहाड़ चढ़ना and है, then go down the other side. फिर उसकी तरफ जाना है। It takes him 9 hours to walk 9 घंटा लगता है उस तरफ पहुंचने के लिए, to get to the main road. एक मेन रोड पर पहुंचने के लिए। And when every month he goes to Bible school, हर महीना वो बाइबल स्कूल जाता है, he walks every month 9 hours up and down the mountains. हर महीने वो ऐसा चलता है, He crosses this river, very high flowing river, इस नदी को पार 17 करता है। times. वो Crosses this river 17 times up and down. 17 बार इस नदी को पार करता है। Sometimes the river is overflowing, कभी ये नदी ऊपर रहती है, and he puts his backpack on top of his head like this, बैग जो है ऊपर रखता है वो, and he swims the river. फिर वो तैरता है उस नदी को। And when he finally gets to the main road, जब वो मेन रोड पे पहुंचता है, he has one change of clothes. उसका और एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, He changes his clothes, वो कपड़ा चेंज करता है, and he takes the bus to Kathmandu for 8 hours. फिर बस लेता है 8 घंटे का काठमांडू। All of that ये सब कुछ to live in a small room एक छोटे से कमरे में रहने के with लिए, 14 other men, Nepali men, वहाँ पे 14 लोग और हैं उस कमरे में, so he can learn the Bible. ताकि वो बाइबल शिक्षा प्राप्त कर सके। Today, और आज up in those mountains, उस पहाड़ पर we have 3 great grace churches. वहाँ पे 3 कलीसिया है ग्रेडगेस के, One is 150 people, 150 लोग हैं, one is 70 people, एक 70 and one is है another 50 people. और 50 का है। He goes and he travels on Thursday to one church, गुरुवार को जाता है एक then टाइम on पे, Friday he walks 3 hours to the other church, शुक्रवार को अलग जगह on जाता है, Saturday he walks through the third church, शनिवार को तीसरे जगह पे जाता and है, then he goes back home to do this family. फिर बाद में वापस वो आता है। Why does he do that? वो ऐसा क्यों करता है? Because he loves
क्योंकि Jesus. उसको यीशु पसंद है Because he wants people to know Jesus. और वो चाहता है कि लोग जाने यीशु Look at those mountains. उस पहाड़ पर I want to think about this. और मैं चाहता हूँ कि आप A सोचिए most इसके बारे में unlikely person to reach to Jesus Christ. ये हो नहीं सकता ऐसा Yeah. You know this other man. These are our mountain churches. You know this other man. ये आपको पता है कौन है You know him? आप जानते हो He got a scooter, but he takes a cycle all the time. उसके पास स्कूटर लेकिन वो साइकिल लेके जाता है He likes the exercise. उसको एक्सरसाइज करना पसंद है Carries his church disciples with him. और अपने शिष्यों को लेके जाता है Man, it's great. I love this man. और मैं पसंद करता हूँ इस आदमी को How many of you love Pastor Aviram? कितने जन पसंद करते हैं Lord, thank you for it, Lord. He came 15, 12 years ago वो 15 साल पहले आया to the city of Mumbai मुंबई में आया था for work और काम के लिए because the city of Mumbai was a very big city, big important city. मुंबई शहर जो है बहुत बड़ा शहर है And he was in Jew somewhere, वो कहाँ जू में था a bandstand, I'm not sure. बैंड स्टैंड में किधर तो था And bandstand. Somebody from my church gave him a gospel tract. किसी ने हमारे चर्च से ट्राई किया He came to Hindi church, हिंदी चर्च में आया and then within 3-4 weeks, और 3 हफ्ते के बाद he went home and he got rid of his idols. फिर वो घर पे गया और अपनी सारी मूर्तियों को निकाल दिया He went to Bible school, और फिर बाइबल स्कूल गए and 7 years later, 7 साल के बाद he went to the mission field. फिर वो मिशन फील्ड में गया And today he's got 3 churches. और उसके बाद अभी 3 कलीसिया है Amazing how what's happening. कितना प्रोत्साहन वाला बात है So, friends, और दोस्त look at that. ये देखो Look at his church. ये देखो चर्च And look at the baptisms. बैप्टिज्म देखिए And what I want you to stay with is this. मैं आपको ये बताना चाहूँगा I'm closing. You don't know what she's going to become. आपको नहीं पता कि ये स्त्री क्या बनेगी It just goes on and on and on. और ये होता और ऐसे चलते रहेगा I have no idea what these men are going to become. और मुझे नहीं पता कि ये आदमी लोग क्या बनेंगे But I want to leave you with this thought. ये आपके विचार में रखना चाहूँगा God uses the most unlikely people. परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता And है He needs all of us. और सबकी जरूरत He पड़ेगी needs all of us. सबकी जरूरत पड़ेगी In the plan. ये इस योजना There में is no unimportant people in God's plan. कोई भी ऐसे सादा लोग नहीं सब लोग महत्वपूर्ण लोग हैं I cannot reach the mountains. मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता I cannot reach Nalasopara. मैं नालासोपारा नहीं जा I सकता cannot reach Mankur. मैं मानकुर नहीं जा We सकता cannot reach Tibet. तिब्बत नहीं जा सकता हूँ God has a plan for every one of us. परमेश्वर के पास योजना है सभी के And लिए a simple lady gave Aviram a tract one day. एक सादी स्त्री ने उस ट्राइब दिया अभी And now he's a missionary somewhere. in अभी वो Lebanon. मिशनरी है लखनऊ में I love that. और ये पसंद करता We're हूँ all needed. और इस सब के लिए ज़रूरत है We're going to have a conference in May. और कॉन्फ्रेंस होगा मई And we में thought of this theme, और ये सोचा इस the household of faith. परमेश्वर के भवन पर United we stand. विश्वास से हम एकता We're में all रहेंगे needed. और इसकी ज़रूरत है We need it. ज़रूरत है This is an amazing time to live in. एक खूबसूरत समय है रहने Boy, के it's so great. और इतना महान है God has put us together. परमेश्वर ने हमें सबको एक साथ रखा है Amen. Amen. Okay. Amen. Praise the Lord.